Hello, dear students. Today, our topic is report writing. What is a report? A report is a factual and objective account of an incident or event. रिपोर्ट क्या होती है? किसी भी इंसिडेंट्स का और इवेंट का फैक्चुअल एंड ऑब्जेक्टिव अकाउंट होता है. व्हाट वर द फैक्ट्स, उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, वो डिटेल देना, दैट इज़ द मेन मोटिव ऑफ अ रिपोर्ट. It is generally free from comments and observations. It provides details in an easy to comprehend language. Easy to comprehend means which can be understood easily, जो जल्दी से समझ आ जाए आसानी से. Its focus is on what? Name and nature of incident, event. When you write report, in the very beginning, in the very first para, you have to write what, on which topic you are giving your report. Next is when, time of the incident, when that incident took place. वो इंसिडेंट कब हुआ? नंबर 1 what, नंबर 2 when, नंबर 3 where. Where means place where the incident took place, वो जगह जहाँ पर वो घटना हुई. And number 4 is in the second para you have to write how. How means cause in case of any accident and other such details. How that incident took place, how that event was organized, you have to give the full detail that will be covered by how. So dear students, whenever you are writing a report, you have to keep these 4 points in your mind. These are the main points for report writing: what, when, where and how. क्या हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ और कैसे हुआ, ये सारी चीज़ें जो हैं वो क्या बन जाती हैं आपकी रिपोर्ट राइटिंग के पार्ट. नेक्स्ट इज ए रिपोर्ट कैन बी शॉर्ट एज वेल एज लॉन्ग. और रिपोर्ट की लेंथ कैसी होनी चाहिए? रिपोर्ट शॉर्ट भी हो सकती है, लॉन्ग भी हो सकती है. ए शॉर्ट रिपोर्ट इज जनरली ए मेमो written by one person to another in same organization. Short report is generally a memo written by. Memo means whenever you are making some notes. This feature is in mobile phones also. Memo, notepad. On the other hand, a long report is investigative in nature. Long report is also made that is investigative in nature. For example, any criminal report, child case report. In other words, it is a descriptive article in which the reporter mentions the time, the place of the action, and gives minute details of the action. दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो ये एक डिस्क्रिप्टिव आर्टिकल की तरह है जिसमें जो रिपोर्टर है मेंशन करता है टाइम, प्लेस ऑफ द एक्शन एंड गिव्स माइन्यूट डिटेल. बारीकी से, माइन्यूट का मतलब होता है बहुत बारीकी से डिटेल वो देता है. नेक्स्ट इज a newspaper report covers criminal activities, social and political events and religious functions. न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स जो होती हैं वो कौन कौन से टॉपिक कवर करती हैं? क्रिमिनल एक्टिविटीज़, सोशल, political events and religious functions. A business report deals with the problems of business organization. In the examination, student is generally asked to write a report either for the school magazine or for a newspaper as a reporter. According to plus 2 exam prescribed by CBSE, students have to write two types of report. Number one is school magazine report and second is a newspaper report. So let us understand the main features of report writing. What type of guidelines are there?
So first of all, we shall discuss about the school magazine report, event, activity and function. Whenever any event is organized, any function is organized in school, what type of points we have to keep in your minds. Before that, I would like to tell you the format of report writing. First of all, you have to write the title and by whom the report is given. Then first para, in first para, what, when, where, or you can write purpose also. You can write purpose क्या कारण था, क्या उसका उद्देश्य था. You can keep in your mind with why, what, when, where and why. This is the first para. In second para, you have to give the detail, how, detailed description, event. And in third para, that will be conclusion, ending. Total 3 paras we have to make in a report. Let us see what type of things we have to keep in our mind. First of all, name of the event. As I told you, name of the event, occasion, situation, time, date and place. Time, date and place means occasion, situation हो गया what. Okay, time, date and place ये हो गया आपका when, where. Okay, what, when and where. So this is our first para. Second is detail. You have to give name and designation of the chief guest. Who was the chief guest? Description of the event. Chief guest address in brief. एड्रेस मतलब ये रहने वाला एड्रेस नहीं है. यहाँ एड्रेस का मतलब है पीपल को एड्रेस करना, स्पीच देना. व्हाट द चीफ गेस्ट सेड इन हिज एड्रेस टू द पीपल. नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ द पर्सन हु थैंक द चीफ गेस्ट. चीफ गेस्ट को थैंक्स किसने किया ये भी आपको मेंशन करना पड़ेगा. योर प्रिंसिपल, मैनेजमेंट. टी एंड स्नैक्स ये आपका रिफ्रेशमेंट हो गया अगर कोई इवेंट्स ऑर्गेनाइज की गई है. एंड कमेंट्स अबाउट द फंक्शन, इवेंट एंड प्रोग्राम. ये आपका सारा कंक्लूजन में चलेगा, प्रोग्राम कैसा रहा. These things you have to keep in your mind when you are writing school magazine report. Next is accidental criminal activity. These will be covered by newspaper report because you have to write two types of report, school magazine and newspaper report. Now keep in mind same things are there. What happened, time, place and date, what, when and where. Students, whatever topic comes in the paper, you have to keep these things in your mind. How to start first para with this. Now in criminal activities, accident, road accident, train accident, fire accident. The persons involved, deaths, you have to give the detail. This will be covered in the second para. How persons involved, deaths, injuries of the person, role of police, support of the people, order of inquiry by the government, नेग्लिजेंस ऑफ द पर्सन कंसर्न्ड. किस तरीके से वो इंसिडेंट हुई. अगर बस एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट हुआ है तो क्या लापरवाही बरतेगी. नेग्लिजेंस का मतलब होता है केयरलेसनेस. अरेस्ट ऑफ द क्रिमिनल्स, आपने लाइन लिखनी होती है कि वो मौके पर ड्राइवर जो फॉल्टी था, क्रिमिनल था, दैट वाज अरेस्टेड और नॉट, और दैट इज़ स्टिल फार अवे फ्रॉम द रीच ऑफ पुलिस, क्या वो अभी पुलिस की पहुंच से बाहर है. तो ग्रांट्स टू द किन ऑफ द किल्ड एंड द इंजर्ड. ग्रांट्स क्या होती है, गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ग्रांट्स दी जाती हैं, सहायता के लिए राशि दी जाती है. किन क्या होता है, रिलेटिव्स, रिश्तेदारों को, परिजनों को. किल्ड एंड द इंजर्ड, जो लोग मारे जाते, जख्मी हो जाते, गवर्नमेंट की तरफ से उनको ग्रांट्स दी जाती हैं, तो वो भी इसके अंदर आपने मेंशन करना होता है. तो डियर स्टूडेंट्स, अभी आपने देखा दो तरह की रिपोर्ट्स हैं आपकी. देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स. वन इज़ स्कूल मैगजीन रिपोर्ट in which school functions, any events are organized. So in that you have to give the detail of the timing, place, where it was organized, chief guest, events detail. And this is the first type of report. And second is
newspaper report that covers the social issues, accidents, social functions, seminar, workshop. So such type of things are covered by newspaper report. Now let us understand through one sample. Recently, your school had a seminar on conservation of water as a part of World Water Day. अब ये स्कूल मैगजीन का पार्ट है वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेशन के तौर पे ओकेजन पे कंजर्वेशन ऑफ वाटर एक सेमिनार ऑर्गेनाइज किया गया. As the school pupil leader of Maryland School Gurugram, write a report in 150 to 200 words for a local daily. Sign as Pritam and Preeti. The local daily इसमें न्यूज़पेपर का भी आ गया. Let us see. As I told you, when you are writing a report, here you have to, in center you have to write topic, conservation of water, then byline, Preeti. Now first para is introduction. First para I told you that will be covered. What? Let us see. Last week, a seminar on conservation of water as a part of World Water Day celebration was held in our school. So dear students, as I told you, first para of the report will cover what, when and where. तो क्या ऑर्गेनाइज किया गया? सेमिनार. ये आपका हो गया सेमिनार. When it was organized? Last week. Where it was organized? In our school. So as I told you, three things will be covered by first para: what, when and where. Last week, a seminar on conservation of water as a part of World Water Day celebrations was held in our school. Next para, detail. As I told you, next para will be covered how. The Deputy Commissioner of Gurugram was the chief guest. Chief guest कौन था? Deputy Commissioner. Many teachers from different schools of the city participated in the seminar. अब पीपल्स इन्वॉल्व कौन कौन लोग इन्वॉल्व हुए थे? काफ़ी टीचर्स ने इसमें पार्टिसिपेशन किया. आवर प्रिंसिपल थैंक द पार्टिसिपेंट्स एंड इनिशिएटेड द डिस्कशन ऑन द टॉपिक. हमारे प्रिंसिपल ने पार्टिसिपेंट्स का धन्यवाद किया एंड इनिशिएटेड द डिस्कशन ऑन द टॉपिक. इनिशिएटेड का मतलब स्टार्टेड. Dear students, you are watching also one thing more कि the whole report will be written in past tense. सारी की सारी रिपोर्ट जो है वो आपकी past tense में लिखी जाएगी. इसमें present और future का mention नहीं होगा. Now let us give the detail. The main speaker read his paper. जो मेन स्पीकर था सेमिनार उसने read his paper and stressed on the need to consume water. उन्होंने जोर दिया इस बात का कि वाटर को बचाया जाए. द वाटर लेवल ऑन द ग्राउंड हैड गॉन डाउन. इफ़ द पीपल डिडंट टेक केयर इन द प्रेजेंट देयर फ्यूचर वुड बी डार्क. तो उनका फ्यूचर जो है वो क्या होगा? डार्क. इट वॉज पॉसिबल दैट द नेक्स्ट वर्ल्ड वार वुड बी फॉट ऑन द इशू ऑफ वाटर. तो ये सारी डिटेल किसने दी थी? मेन स्पीकर ने इन हिज स्पीच. नेक्स्ट इज द पार्टिसिपेंट्स. और क्या हुआ? द पार्टिसिपेंट्स रेज्ड सर्टेन पॉइंट्स एंड रिक्वेस्टेड द मेन स्पीकर टू हाईलाइट द मेथड्स टू कंजर्व वाटर. तो पार्टिसिपेंट्स थे, उन्होंने पॉइंट्स रेज किए, अपनी क्वेरीज क्लियर की और स्पीकर को बताया, रिक्वेस्ट की कि दैट ही शुड बी हाईलाइट सम मेथड्स ऑफ कंजर्विंग वाटर. द स्पीकर suggested that the government should check the misuse of water by the individuals. Individual means people, those who are misusing the water, government should check. Check means get control. The government should enact a law which should empower the government to have full control over the water. सेमिनार की मेन हाइलाइट्स क्या रही कि सजेशन क्या दिया गया? द गवर्नमेंट शुड इनेक्ट ए लॉ. गवर्नमेंट को ऐसा लॉ बनाना चाहिए
which should empower the government to have full control over the water. So a lively discussion followed. Lively discussion followed means everybody participated actively in that seminar. And the end conclusion, as I told you, conclusion में क्या हुआ? The principal summed up the discussion. Principal ने discussion को sum up किया and invited all over a cup of tea in the school hall. तो ये आपका टी स्नैक्स रिफ्रेशमेंट है, उसके बारे में आएगा. तो ये अभी जो रिपोर्ट लिखी है इसमें आप और भी बहुत कुछ ऐड कर सकते हैं. दिस इज़ जस्ट ए सैम्पल. अभी हमने जो गाइडलाइंस पढ़ी थी उसमें आया था थैंक्स ऑफ द चीफ गेस्ट. तो इन द एंड, इन द कंक्लूजन लाइन, इट कैन बी एडेड द प्रिंसिपल, आवर ऑनरेबल प्रिंसिपल thanked the chief guest for giving his precious time. Who was the chief guest? Deputy Commissioner. Deputy Commissioner was the chief guest. So when he thanked him, and these are our honored rituals also. ये हमारा रिवाज भी है कि whosoever guest is coming, we give him a token of honor also. So honorable principal gave a token of honor. Token of honor means token of love भी होता है. The principal gave a memento shield to the chief guest for giving his precious time and as a token of honor. स्मृति चिन्ह के तौर पर जो है उन्हें एक मोमेंटो भेंट किया. और वोट ऑफ थैंक्स भी आप लिख सकते हैं इसके अंदर. थैंक्स भी आ जाएगा, लैंग्वेज चेंज करनी है. द प्रिंसिपल गेव ए वोट ऑफ थैंक्स टू द चीफ गेस्ट. तो उसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, वोट ऑफ थैंक्स. द प्रिंसिपल गेव ए वोट ऑफ थैंक्स टू द चीफ गेस्ट फॉर गिविंग हिज प्रीशियस टाइम एंड गिव ए टोकन ऑफ ऑनर. ये 2 पॉइंट्स और आप ऐड कर लें, जो इसमें नहीं है, होने चाहिए थे. आप इसे ऐड कर लें और आप ज़रूर लिखा करें, क्योंकि ये स्कूल मैगज़ीन रिपोर्ट है और उसमें प्रिंसिपल ने एंडिंग कैसे की. और इसमें आ सकता था, जो इसमें नहीं दिया हुआ, कि व्हाट चीफ गेस्ट सेड इन एड्रेस. अगर चीफ गेस्ट बुलाया है, डिप्टी कमिश्नर को बुलाया है, तो उन्होंने भी कुछ कहा होगा अपने एड्रेस के अंदर सेमिनार के बारे में कि यस, सच टाइप ऑफ सेमिनार गिव ए प्लेटफॉर्म टू द पार्टिसिपेंट्स, टू द पब्लिक, to think about the crisis of water and to think about the solutions how to conserve water. So such type of seminar are valuable and such type of seminar should be organized in future also. तो इस तरीके से चीफ गेस्ट ने कुछ सुझाव दिए, अपने एड्रेस में क्या कहा वो भी आपने इसके अंदर मेंशन कर सकते हैं. और अल्टीमेटली जो है वो थैंक्स होगा प्रिंसिपल की तरफ से प्रोग्राम के बारे में. जैसे कि हमने ओवरऑल प्रिंसिपल ने क्या किया, तो प्रिंसिपल थैंक्ड ऑल द पार्टिसिपेंट्स, क्योंकि स्कूल के अंदर हुआ है, पार्टिसिपेंट्स, स्टाफ मेंबर्स, जो भी फैकल्टी है उनका थैंक्स किया फॉर मेकिंग अ सेमिनार, making the seminar a grand success. A grand success. So in this way, the ending line can be written in this way also. So I hope you well understood this poem. This is just sample report. So dear student, as I told you, you have to keep in your mind 3 things. First para, once again I am telling, what, when and where, and why also. Why भी ऐड कर दें. what, when, where, these should be covered first para. second para, how, डिटेल, पूरी डिटेल इसके अंदर आ जाए. और थर्ड में आपका कंक्लूजन आ जाएगा. ये 3 चीज़ें आपने रखनी है माइंड में. what, when, where, why, second, how, डिटेल, थर्ड, कंक्लूजन.
वाई का मतलब इसमें कारण नहीं, पर्पस देना है। वाई को आपने पर्पस लेके चलना है। जैसे आपके स्कूल में साइंस एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज की गई, तो साइंस एग्जीबिशन वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय आवर स्कूल ऑन दिस एंड दिस डेट। इट्स पर्पस वाज टू अराउज द क्यूरियोसिटी of the students in the science, in the technology. So in this way the purpose can be written very easily. So dear student, this was all about the report writing. I hope you well understood it. Read from the practice paper, your books, read newspapers for the newspaper writing, and you will understand better. You will be perfect in writing reports. Thank you. Have a nice day.